आगे ले गए हैं इस मुकाबले में। 7.76 पर अब रन रेट, हर एक रन चुराना चाहते हैं। साइड बटा चलेंगे बाहर समझ इस तरह से परिवर्तन किया, एक समय पर इन्हें अटैक किया था लूक राइट नेट पर। ये एक्सपीरियंस से आता होगा, ये जो कंपोजर है जिसे के साथ बल भी नहीं है। जगह देखी, लक्ष्य देखा, टारगेट क्या है, विकेट गिराना है और आसानी से नीचे से बॉल मार दी विकेटों पर। आज बैट हैंडेड ने अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है। स्कॉट बॉलर नवाज बल्लेबाजी करने के लिए ज़्यादातर मशहूर है अपने गेंदबाजी के लिए। इस समय 4 गेंदें बाकी हैं। स्कॉट बॉलर क्या यहाँ पर 4 लगा सकते हैं, क्या छक्का लग सकता है? शॉन ऑफ एबट है उनके सामने। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, 2 रन तो भाग सकते हैं। सिर्फ 1 रन लिया है बॉलर ने। साहू आउट। अब सबकी नजरें हिल्टन हाउस के बल्ले प्रमोद आ रहे हैं। बड़े शॉट्स ये भी लगा सकते हैं, बड़े शॉट्स लगाने का, लेकिन सामने एक चतुर गेंदबाज है। एक तेज गेंदबाज का सामना, एक तेज गेंदबाज माइंड गेम्स। कोशिश की ब्रेकेज अपने गेंदबाज से बात करते हुए क्या वापसी करी है सिटी सिक्सर्स ने इस मैच में। यही कहते हैं T20 यही माया, शुरुआत में बहुत खाया लेकिन उसके बाद वापसी। बच्चा बैट नहीं उठो। उनको मालूम था कि 4 मिलने वाला है। स्लो डिलीवरी थी, पता है कि शॉर्ट थर्ड मैन ऊपर है, देखा भी नहीं बॉल कहां जा रही है। उनको पता था कि 4 रन तो मिल ही गए। विकेट वाला विकेट सलमान खान और मेरे सब लोग 7 डाउन 69 पे 7 టైమింగ్ బాల్ వస్తలేదా? నేను లేజీగా ఉంది, నా ఫుట్ వర్క్ నాకు లేజీగా ఉంది. అదే ఉంది ఫస్ట్ మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తామే మనం. चलिए हिल्टन हाउस जी, ఏయ్ का रास्ता मालूम है मानरा बच्चा ट्राई सारी क्योंकि अब वाह भाई ये साहू बल्ले के साथ सिर्फ 4 रन बना पाए। इस स्थिति में आए आप उन्हें भी अहम 4 रन कहेंगे। इस मैच पे 70 है ना स्कोर। सिक्सर्स के खाते में और इस ओवर में सिर्फ गति परिवर्तन ही देखने को मिला है और इस बार नाकाम रहे। मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, नेथन लायन ने इस बार कैच पकड़ लिया। 8वां विकेट गिरा 155 पर। हिल्टन हाउस ने सिर्फ बनाए हैं वही 4 रन। अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी है स्टार्स के लिए। रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है पावर प्ले के मुताबिक। 8 विकेट पर 155 रन, ऐसा लग रहा था एक समय कि 170-175 रन बना सकती है स्टार्स की टीम। लक्ष्य बहुत छोटा कर दिया है यहाँ पर सिक्सर्स ने। डबल 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 अरे वही बल्ला घुमाया, वहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा यहाँ। टाइम पास कर रहे हैं लोग। 56 पर 8, 20 ओवर की समाप्ति पर बेहतरीन कमबैक यहाँ पर गेंदबाजों द्वारा सिक्सर्स की टीम के लिए। और तो सीधा बैटिंग करने ना सिर्फ 6 रन आखिरी ओवर में, 2 विकेट। शॉन एबट सिडनी सिक्सर्स की बेहतरीन वापसी। सिर्फ 156 बना पाए मेलबर्न स्टार्स। बैटिंग एक बेहतरीन शुरुआत के बाद खुश नहीं होंगे सिडनी सिक्सर्स के पास अब मौका है। 157 चाहिए जीत और सेमीफाइनल्स के लिए। बॉल में पे उड़े क्लास लेवल बड़ा अच्छा विकेट कवर है। विल भी है 26 रन और 6 विकेट। ये रहा लेखा जोखा डेथ ओवर्स का। शॉर्ट एरियर व्यू मेलबर्न से थोड़ा सा सूर्य देवता को सब बाय बाय करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अब सिडनी सिक्सर्स बाय बाय लग रहा था ये मुकाबला शुरुआत में। साबा ने जो वापसी करी, अब तो पूरा चांस देख रहे होंगे। पहली इनिंग्स की हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि कहानी वहां साफ हो जाएगी। क्यों हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ना खुश हो गए मेलबर्न स्टार्स, और इसकी वजह है ये शुरुआत और इसके बाद 72 for 8 13.5। भाई बैट्समैन कौन है? रणित नजारा देखने को मिला था। क्लीन शॉट्स लगाए थे वहां पर, पीछे नहीं थे, उन्होंने भी अच्छे शॉट्स लगाए थे। इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई थी, वहां
कमाल की वापसी की है सिक्सर्स ने। जैसे ही क्वीनी का विकेट मिला उसके बाद वो निकालने समय एक बार फिर से अच्छे लय में नजर आए थे आज ऑफ क्वीनी। 18 फ्री टाइमिंग, फ्री फुटवर्क, वो सब कुछ देखने को मिला। बल्लेबाज को मैच चाहिए था, पीछे नहीं थे। बॉल किया था और दूसरे छोर से तो रॉब क्वीनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये था अंतिम बॉल थी पावर प्ले की, वहां पर कप्तान हेनरिक्स ने उनका विकेट लिया। बना दो उसके बाद से 15 रन तक सही हुआ। राइट पिच फिर शुरू हुआ लास्ट संघर्ष, विकेट फिर शुरू हुई अच्छी गेंदबाजी सिक्सर्स की। ल्यूक राइट ने अच्छी बल्लेबाजी करते रहे। यंग मिला था उस बार, उसके बाद केविन पीटरसन आया। शुरुआत तो अच्छी रही पीटरसन। लास्ट विकेट संघर्ष राइट ने अपना छोड़, जैसे आपने कहा, सभा संभाले रखा। साई तेजा केविन पीटरसन पहले स्ट्राइक रोटेट करते रहे, फिर बड़े शॉट की जब तलाश उन्हें हुई तो सफल ना हुए और शतक 38 गेंदों पर पूरा किया ल्यूक राइट ने। ये शॉट जब लगाया था केविन पीटरसन ने, तब लगा था कि अब शायद माहौल बदलेगा, अब थोड़ा मामला बदलेगा। ऐसा हुआ नहीं। ल्यूक राइट ने बहुत अच्छी पारी खेली और यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ मेलबर्न स्टार्स का। नेथन लायन आए गेंदबाजी करने, पहले ल्यूक राइट, उसके बाद इवान गुरबिस। अंपायर का फैसला आउट। ब्रायन हैरिस ने कुछ समय जरूर लगाया, बाद में हमने देखा हेलमेट से भी संपर्क हुआ था, लेकिन फैसला आउट था। और वहां से एक के बाद एक खिलाड़ी रन गति बढ़ाने की कोशिश में नाकाम रहा। ब्रायन हैरिस तो खूब छाए स्टंप्स के पीछे। लायन का बड़ा ही बेहतरीन योगदान रहा इस मैच में। स्पेल उन्होंने डाला, 2 विकेट उनको मिला, विकेट उन्होंने लिया। में तो बस कठिनाई बढ़ती गई वहां पर स्टार्स ने। पीटरसन भी आउट हो गए, स्कोर कर रहे थे इतने देर से, सफलता मिली नहीं। 72 बॉलर कौन है? क्षितिज। टारगेट रखा है अभी, बहुत कम है। सिक्सर्स का मैक्सिमाइज हमारा बेटी का 70 वाला लाइन पहुंच जाए तो भी बहुत है। 72 है ना, घंटा 72 हो गया। उसके बाद भी आउट हो गए। भाई कितना स्कोर हुआ? 72 72 हो गया। बहुत हो गया ना? नहीं घंटा बहुत हो गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी है। स्कॉट बॉलर है माइकल पियर है जो शुरुआत करते हैं, तो तो वो जा रहा है 156 को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। या लास्ट देखेंगे कप के लोग कि चैंपियन है बड़ी लास्ट मंथ हार के। ना हो, अगर हो भी, क्योंकि नेट रन रेट मेलबर्न रेनिंग सही में वो लोग ही पता है मेरे को। उधर एक लड़का है, उससे बात किया तो बताया। साढ़े ब्यूड़े भाई ब्यूड़े। अरे पोल है तो नहीं जाएगा मत तू अरे साई तेजा आराम से। कौन? फील्डिंग भी करना, टूर्नामेंट खेलना। फाइनल तक नॉकआउट तो देखते पहले। क्या है भाई, तुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है? उस पे अकेले फेंचा है, लेके करूँ। ले लो बैठ देखते हो, मैच खा खा तो मोटा है। कोशिश तो वही कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में मैं तो ज्वाइन कर लिया। कामयाब ना हुए। पहला विकेट मिचेल जॉनसन ऑफ स्कॉचर्स के नाम। ओमार हैरिस को लगा झटका। मेरे को तो ऐसा हो रहा था ना, पूरा ओवर खड़े रह रहा, लास्ट बॉल एक गोल दे रहा। शॉट बॉल और से सीधा दिशा दिखाई। खेला देखा मारा वो दूसरा वन का। ये नीचे जानना चाहते थे किस मंजिल का बना ये खिलाड़ी। ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इसलिए जल्दी दे दे रहे। लेना टाइम मौजूद थे फाइन लेग पर और बेन मैकडर्मट जिनसे उम्मीद थी एक बड़ी पारी की, वो उम्मीदें हुई खत्म। मिचेल जॉनसन को मिली दूसरी सफलता। एस्टन टर्नर दूसरा ओवर किया था, 9 रन दिए थे, इन्हें वापस लाया गया है। शॉट को मारना चाहते थे और
शॉटेड बाय शॉटेड हेलिकॉप्टर मारा है हेलिकॉप्टर मारा है 11 ओवर में ना वो लोग 9 विकेट गिराती है टेस्ट सीरीज खेल रहे थे बॉल नीचे बेहतरीन कैच ऐसा होना चाहिए याराना दोस्तों चलो भाई आ जाओ अरे घंटा नीचे ऊपर ही था चलो चलो ओए वो भाई ऐसा करना अंदर घुस जाना बच्चों हाँ भाई नीचे आ जा सागी भाई आउट बोल्ड हुआ सैमसंग का फ़ोन कहाँ है, लेके चले गए? फोन मेरे बैग में।
runs. 2 ओवर के बाद 5th ओवर में आओ. घर जाके वो कार में से निकलने के लिए देखे तो कुछ नहीं है उधर, तो अभी याद आया वहाँ रखे बाद हो जहाँ रखा वहीं छोड़ दिया वहीं था. किसी ने नहीं देखा हाँ नजर नहीं पड़ी किसी. वो शाम में पड़ती है सब हो जाता नहीं. क्या क्या बचा जब देखते सब. क्या क्या चल रहा है बस एंजॉय कर रहा हूँ. वो नहीं ये इधर चाहे क्यों जमीन का नहीं. सब उधर ही है ये ओवर के बाद Some normal cricket shots and a good batting track should be the order of the day for the Sixers. Off the mark. So a very solid start by the Stars. recording Right in upload this कब game करते now. Well, they certainly are. Junior, in the comparison at the same time is getting a little bit wider. Looking down the pitch, Munro got it right in the middle. That's about it. No placement, no nothing. Not much finesse in that innings at all from Munro. अब लैपटॉप है Ash Barrow there, just into action. I think he's just checking whether Quine was inside the circle maybe. I think that's what it was all about. Hughes, 21 off 20. That's that good bumper that you mentioned, Junior. I reckon the umpire was checking मेमोरी that. कार्ड है ना उसका Quine was right on the edge of the circle there. Not much full there, boys. The Harvey Norman pitch map. Good
length or back into that short area. There's the wickets. आपके टीम के नाम से अपलोड करते One हैं full zone. चार्जिंग पे फोन लगे हुआ है नहीं, वो ले लेके आते हैं। Big boundaries on the side. चार्जिंग पे जो फोन लगे हैं ना नोकिया का, जिस पे फोन आ रहे थे नहीं, वो फोन ले लेके आते थे। Well, that'll be wide to bowl that one again. Wolfie doesn't like the call. Not that और कितने बाला है he does. Pretty hard to argue with that one, though, I think. With the try, though, man out of deep square. Just got a little bit short, a little bit leg side. Sam Harper very sharp behind the pegs there, good footwork. Just upset with himself. Wolfie. Good over. A wicket and 5 off at 2 for 37. Mexicans there, there's everyone cheering on their home team. Steve and Hccl. One ball. Featured prominently, hasn't he, after that amazing situation we saw a few years ago. Tell you what, he's scared off all the real Hccls. Haven't seen one at all tonight. A few here earlier today. Up on the top of the roof. I think they're watching both the tennis and the cricket from the roof. Golbus. Again, back of length. Nothing to drive for the Sixers. Something to just keep an eye on now. Oh, hello, there you go. That's why there's no seagulls. Some sort of kite. Oh, an eagle. Eagle kite. Hawk. Found a hawk. A bit smarter than that, the seagulls, aren't they? I thought so. It's not real, that June. That was a 10 one. The Sixers. Need this win to get up to 10 points. Talking about the comparison, at the same time the Stars were 1 for 64, Sixers are 2 for 38, but just yet they don't need to panic. Run rate's just 8.5. It's nicely hit back with a square from Daniel Hughes right in the gap. Peterson won't get that. It's a much needed boundary. Hughes on to 26 now. Golbus is probably a bowler they can target. He's an all-rounder, decent bowler, but not quite the quality of a Boland or a Hilford House. Shot from Hughes just helped it on its way. I said they don't need to panic. I'm talking about the Sixers because the Stars didn't really accelerate. 81 It's the same ball, it's the same shot. It's picked out Peterson this time, deep back to square. They keep that run rate obviously around the 7 mark. The comparison is getting closer and closer as they go along. The one thing that will kill the Sixers from here though, if they get worried about that run rate getting out of hand and lose a couple more wickets, if they get them find themselves 4 or 5 down inside 10 or 12 overs, they'll find it really hard to win from there. And then Michael Beard will come back in with a couple of overs, and then Liam Bowe, young man. Do you think that's why they've kept Madison down the order, maybe to play the spinners at the back end of the game? Or maybe, but Colin Munro would have done a reasonable job as well, unless they were worried about Munro against the spin from what they saw at the SCG. But yeah, I'm not sure. It's an unusual role, isn't it, for Madison down there? We've seen him even open about it. Well, I'd like to see statement actually, to be honest. I think he's such a clean striker of the ball when the field's up. Agree with that, June. Matador Cup, we saw him open quite a bit, caused some damage. Maybe just a bit more responsibility for him down there as well. That might be good for him. You don't have to think his way through a certain situation or scenario that he's confronted with. Might be good for him. Reconfirmation Tuesday night semi-final number 1. Followed up by number 2 on Wednesday, and then next Saturday the big final. 3 on 10. BMR है SSR 1 और 2 है One boundary in that over. 8 runs off it. It's 2 for 45. UBCC 1 के बाद ना यार SSR उधर है अपना VGIT कॉलेज है BJP उसकी लाइन में अंदर प्लेटलेट सिस्टम नहीं वो बाबू खान में है प्लेटलेट्स बाबू का मतलब नहीं है क्या है
girls 45. can there play in your local girls league. Go to Yeah. playcricket.com.au/girls.com today to find out where to play cricket. Indeed, they can play cricket. The WBBL is coming to a wonderful climax towards the end of the season there. The semi-finals are being decided. So much cricket to be played around Australia. Whoa, and Name संतोष साहू है देखो संतोष आगे डाले थे अभी साहू Yeah, seen him bowl much. Just bowled the 3 overs in his opening game. Oh, pretty much out of club cricket. Essendon he plays for. He's from Bendigo. A little wrong in there as well. He did not look flustered at all in that maybe only when he was next in the bat when they needed about 5 to win. Sweep from Hughes, just off the toe of the bat, just one to Hilfenhaus to break the squares. So the key here, Punt, you think for the Sixers, they've just maintained it at about 7.5 and over, and they can rest easy. Yeah, and to highlight that, they got 8 off that last over from Evan Golbus without taking any sort of risk whatsoever. So they can do that for another few overs. I mean, what they don't need is a couple of overs of 3 or 4, because that run rate then goes to sort of 9.5, and then you start getting a little bit worried. This has been a good start from Bow again, just the 1 run for 4 balls. I reckon he'd be hard to pick because he's got a real bustling quick action. Yeah. He doesn't sort of just, set it up nicely. There's a lot of hurry-scurry there. Footwork by Enriquez. I don't know if it'll be 4. It will be. Beautifully placed. Pointy down there, so good footwork. Got on the half volley, so it didn't matter which way it really turned. It's a feature of his batting against spin bowling, isn't it? Enriquez likes to use his feet. Hits well straight down the ground, whether it be aerial or along the ground. Doesn't look to be a huge spinner of the ball, Liam Bowe, but he was very consistent game 1. That's a wrong one. Well, down to Virat Kohli shot. It was, wasn't it? Just 1. Subcontinental. Good start from Bowe, 6 off the over. 6 is 2 for 51. And Roger Aldridge down on the sideline with a couple of Network 10 stars from Gogglebox. Yeah, that's exactly right, Gilly. I'm down here with Adam and Simon from Gogglebox. Gentlemen, welcome to the MCG. Now, most people, when they get a second job, it's, pretty hard labour, and you managed to scrounge one up watching TV. How did that all come about? Believe it or not, we were just sitting at the pub after a hard day of uni, and a lady came over. She told us about the show. She thought we'd be good. She told us the premise. We said, that's rubbish. She told us the name Gogglebox. We said, that's even worse. And she goes, trust me, it's really good. And then next thing you know, there's cameras in our lounge. Well, look, I'll be honest. I'll somewhat unashamedly admit that when my wife Catherine's watching Sex and the City, I might, have a bit of a look. What is your guilty pleasure when it comes to television? I reckon we're both the same here. It's a Sunday hungover special, Geordie Shore. Anything from MTV, just to pump yourself up a little bit. You're like, geez, I'm not actually that bad of a person. This is all right. So, Geordie Shore, and then always Heart of Dixie, Rachel Bilson. Heart of Dixie, number 1. There's another 4 for the Sydney Sixers. They move along 2 for 55. Heart of Dixie, we'll get back to that after, I think. There's a lot of good shows coming up in 2017 on 10 and on Foxtel. What are you looking for? Score 48. I'm 7 overs. Survivor when it's back in 7 2017. overs, 48 for 2. 48 for 2. Okay, well, Game of Thrones there. Well, given that we know that you like TV, we would have got you to call a game of cricket, but we think you're probably better suited to Gogglebox than the Big Bash. Another one comes down. Quality players there. It's more about shot selection and reading the game. Just on that hit and miss, say there, Daniel Hughes over a couple of 100 runs, Enriquez over 150, and Sam Billings, who's gone, was in 120, but no one else has got to 100 in total in aggregate for this tournament. But you look at the Sixers over the last 3 or 4 years, it's been the same every season. They just find 1 or 2 players to win the crunch moments in games. Look at their stats and they're not that good, but under pressure they seem to be able to perform to win the key moments. Slow ball bumper there, 123 on the Optus speedometer. Which is fine, June, unless those players get out early like they did in the game against the Thunder the other night. They might out in 10 overs, or they lose a game in 10 overs. So it's important that these two, now that they're in and have got this partnership going, 24 or 21, that they bat deep into the innings now, not leave it to anybody else. 6 off the over already, 1 ball to go. Run rate creeping up towards 9. Pushed out the man to cover. 1 to Enriquez, he'll keep the strike. 9 overs gone, 2 for 58.
8 ओवर है 54 54 5-4 तो जल्दी मार दिया तो स्क्वाड दे दिया 66 is 258, fighting for survival. Comparative time, Stars were 1 for 80, but it's slowed down around about at this point. Gee, looks impressive, this young fella. I'll tell you why I reckon he's a little bit hard, Jude. He's got a very fast arm action. The ball comes to his hand quite slowly. Well, that looks quite quick again. It was 81 kilometres an hour. So those guys sometimes a little bit hard to pick up the actual pace of the ball's coming down. 8.4. He uses his feet again, Yorks himself. 7.5 And just the way he gets through the crease, he sort of hunches over a fraction. Bit of David Friedman there, Yeah, Catberg was sneaking in. David Friedman. Sneaking in. Yeah, David Friedman was a left arm leg spinner for New South Wales in the 90s. Australia Chairman of selectors now, I think, for New South Wales. 11, Australia A. Played for Bankstown, Freddie Friedman. Servant to the game of cricket. Used to call him the gangster, he used to sneak in. 58 Tonight, but he looks like he's किसी को करा दो पार्टी बॉलर कौन है संतोष सागी है बॉलर Madison. Cometh the man. This is where he can really shine out under pressure tonight. Class player, what can he do? Liam Rose bowling well, mixing it up. Well, a few wrong ones, a few orthodox हाँ भाई ladies. बैट्समैन का नाम मनोज Might have been a wrong one first up, was it? Side edge, gonna have to hurry. Good running. So good over by Liam Bow, 3 for 66. $58 for 3 8.1 91 off 60 deliveries for the Sixers. What is their fate? Which way do they go? Hughes hasn't had much strike the last 2 or 3 overs. He's 32 from 31 hits a wicket. And Liam Bow, let's have a look at it. Rolled the wrong on the previous ball. This time a full orthodox leg spinner. As the bar flying past Sam Harper's helmet. From stump cam. Just misjudged the length there, I think. Enriquez. Maybe premeditated, not sure. I reckon he knew he was going halfway down as well. You could hear a little come out just before the ball pitched. Madison has sweetly struck. Off cut off Golbus. Good signs there from Madison. Hasn't got much time to settle in here, has he? nearly 9.5 and over required. Yep. Comparison, Gilly, the Stars were 1 for 90. 3 for 67. That gap's getting a little bit wider. Huge partnership here between these two young left-handers. He's a bit of a one-pace batsman too, Nick Madison. He's either a 4 or nothing type player. He's not a real work into the gaps and get twos. He's scored very sweetly, but One is gone. Sir, we will play at loss. No, 6. Elder. LW, not out. Thinking देखो इधर कट भी लगाना
इधर डाटा बहुत भैया कितना स्कोर है 8.561 for 4 स्कोर 61 है 61 for 4 8.5 ठीक He's very late. I think that's something which has helped him enhance 20 runs his remaining. batting skills. He's late. चलो फिर मैं निकल रहा हूँ नहीं कर रहा है ठीक है राइट सी यू Yet again, that comes out late cut. इट्स देयर Alright, they might think about putting a इसको short बैक man चाहिए in अभी रहने दे साले बीसी रहने देंगे captain behind the stumps. But it's a short गब्बर है गब्बर राइट संजय संजय This is by far क्या the है best आज दिमाग ऐसा चल रहा है टेलीफोन पहले वैलेट भूल गया अब फोन भूल गया इधर आ इधर आ वो खेलता है गेंदबाज से खेलता है गेंदों से नहीं बल्कि गेंदबाज से खेलने लगता है कुछ समय के बाद तभी तो वो एक खास बल्लेबाज ball that was fuller. Still another 13 overs remaining for closer play. But at 191 for 6, Gujarat, it's a major comeback after getting rid of Arun Nair, Manoj Tiwari, Adman Saha. Those are big names. Usually they don't go away without 100 or 150 under their belt. Leaving Cheteshwar Pujara there to fight a lone battle. Was there a glove on that one? Yes, it was. Come on! A bouncer and Pujara is gone. One man that they were believing who could get them out. This is turning out to be Gujarat's day. और ये बहुत बड़ा धक्का है यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया को और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ ईश्वर चौधरी की कंधे का अच्छा इस्तेमाल अच्छी गति थी और उसको अगर आप देखें तो लाइन बहुत बढ़िया थी कि आप बच ही नहीं सकते थे आपको खेलना ही था वो शॉट और बाकी तो काम पार्थिव पटेल ने कर दिया तो कहना होगा कि बड़ी मछली फंस गई जाल में यहाँ
झटका लगा रेस्ट ऑफ इंडिया को, कप्तान चले वापस 86 रन बना के 191 पे 7। पार्टी 10 रन मारना, 10 रन खाली 10 मारना है। बॉलर वनमाली कंटिन्यू है। आज अमिल भाई बॉलर वनमाली कंटिन्यू।
8 रन 8 रन। Batsman on the rest of India unit. He's made his bowlers bowl to areas of weakness. When Herwadkar came in, he had 3 men catching on the onside. It looked strange, but he knew what he was doing. जी आपने कप्तान की तारीफ की, उनकी रणनीतियों की तारीफ की अभी भी, लेकिन मुझे लगता है गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि कप्तान ने फील्ड लगाई और गेंदबाज ने उसके हिसाब से गेंदबाजी भी की, क्योंकि तभी आपको मनचाहा परिणाम मिलता है जब कप्तान और गेंदबाज एक ही सोच के साथ उतरते हैं। कप्तान कितनी भी रणनीतियां बना ले, कितनी भी अलग अलग तरह से फील्ड सजा ले, लेकिन गेंदबाज अगर गेंद का टप्पा वहां नहीं डालेगा तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए गेंदबाज की भी बड़ी अहम भूमिका रहती है और तारीफ करनी होगी आज जिस तरह से गुजरात के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। True, strategy is one point, and then execution is what you're talking about, and the execution has been perfect. Ishwar Chaudhary didn't play the final, and Thadani making his debut. Not much experience on the side, with just one 5-wicket haul for a man like Gaja. And no RP Singh, no Rush Kalaria, and walking in with 4 changes from the final. I think 167 runs with 3 wickets here to get. Brilliant fielding. That's been a standout here. Absolutely wonderful fielding. 191 for 7. जाने बाहर बड़ा 2.25 जो आज का रन रेट रहा है। इस सेशन की हम बात कर रहे हैं। 4 विकेट मिली है यहाँ पे गुजरात के गेंदबाजों को। जी हाँ, 5:08 तक आज खेल है और सूरज के ढलने तक 2 मुंबईकर और उनकी आवाज आपके साथ रहेगी। रोहन गावस्कर, अमोल मुजुमदार।